Hello friends, so in this video we are going to discuss the unit 21 of module C of ABM subject, that is the development of human resource. So here we will cover these are the things, and here we are referring the Macmillan book, that is by CAIIb, right? So here first something like objectives we will discuss, then introductions, and the important thing is this is that it's HRD and its subsystems, and next one is role and impact of training. In this video we will discuss all those things, but in this unit it's cover attitude development, career path planning, self development, talent management. So these all the chapters are very important in the module C with respect to the exams. It carries maximum marks like 10 to 15 marks from this unit only. So be very important this is, and so here we are going to discuss that is the HRD and its subsystems and training and development, right? So this is also very important with respect to exams. एग्जाम के हिसाब से ये बहुत important रोल प्ले करता है. So इसमें जो इंट्रोडक्शन है हमारा फर्स्ट इंट्रोडक्शन हमें पता है कि HRM क्या होता है, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, एंड HRD क्या होता है, राइट? सो here the perspective of managing people in the organization over a period of time has been maturing to include totally human beings. It's already, we know that HRM जो होता है now encompasses all aspects of dealing with the people, and it is now termed as human resource management. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है? जो हम पीपल को टोटल डील करते हैं, उनका जो रिक्वायरमेंट रहता है उसको डील करते हैं एनी टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स management, right? Next one is HRD and its subsystems, the industrial evolutions with its. So these are some theoretical things, and for CAIIb exams these are not more important, but you can cover this if you want to know by the Macmillan book. We'll cover only important things, right? In several significant changes, if we are talk about the 1970 and 1980, उसके हिसाब से अभी HRD went beyond mere trainings and activity. अभी उस टाइम में ओनली ट्रेनिंग एक्टिविटी हो रहा था, बट नाउ ये पूरी बहुत ज़्यादा चेंजेस हो गया. इन द 90s देयर वाज ए कंटिन्यूड सर्ज इन द इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी. वर्कर डिमांडेड ए लार्ज मोर ऑटोनोमस रोल इन द डिसीजन मेकिंग and market selection, production identifications, work planning, and ever student selections. So managers needed continuous. So उसके लिए managers needed continual training in participating lead, conflict resolutions, interpersonal communications. So वहाँ पर जो डिमांड था उसको मैनेज करने के लिए जो मैनेजर्स थे उनको ट्रेनिंग की जरूरत था. So in that in 1990 focused on massive computerization of work mainly to improve the operational efficiency. So उसके बाद and also cost reduction. उसके बाद जो हमारा HRM है वो बहुत ज़्यादा important रोल प्ले किया. So जो important subjects रहेगा इसमें ये है आपका fully theories. So now it was very important with respect to the CAIIb exams, right? So here HRM is now called upon a become a strategic partner to make its effort more effective, right? And personal performance oriented in line and the organization goals and strategies. अभी जो HRM है बहुत important partner of any organizations. The strategic HRM is gaining its significance. So strategic HRM अभी बहुत important हो रहा है, right? So HRD today is a process by which employee of any organizations are helped in a continuous and a planned way. HRD ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इसके कारण अभी जो एम्प्लॉयज रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा हेल्प हो रहा है टू गेट द कंटिन्यूस एंड मोर एफर्ट फ्रॉम द HRD डिपार्टमेंट. सो दीज आर द सम वे, राइट? सो इम्पोर्टेंट जो थिंग्स है हमारा ये है. In this context, capability of each employee as an individual, जो goal है of HRD, capability of each individual in relation to their personal role. These are the things you can go through this. And the next one is the typical system development to enhance the HRD goals. That is, this is very important, right? So first one is training and development. Second is training. आपको पता है कि हमें जो नॉर्मली बैंक में भी ट्रेनिंग प्रोग्राम अरेंज किया जाता है, right? To get to acquainted all the new schemes or any new developments. Then है performance appraisal, feedback and counseling.
परफॉर्मेंस अप्रेजल, जो परफॉर्म करते हैं एम्प्लॉइज उसको अप्रेज करना, फीडबैक देना, हाउ टू इम्प्रूव, सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट वन इज पोटेंशियल अप्रेजल, जो पोटेंशियल कैंडिडेट उनको अप्रेज करना, तो उनको मोटिवेट करना एंड टू गिव देम कैरियर काउंसलिंग टू गो मोर फर्दर, सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, राइट. When employees or people who are working in the bank or any institution, they are getting trained, then automatically organization will get some more development. Human resource information system, that is HRIS. That is, now human resource systems are also getting more informative. Talent management and succession planning, जो talented persons है उनको manage करना, उनको motivate करना for getting more things. The HR broadly has 3 subsystems, important things. So this is very important. Go through this. First one is 3 subsystems, that is administrative, development and maintenance, right. There are strongly interlinked between this, and what are these we'll discuss more deeply. The first one is job or role analysis. Before anything in that, we have to analyze the role for which we are going to discuss. Job role analysis is a technique which facilitates the listing of what is required to perform a task or a job. एक जॉब को परफॉर्म करने से पहले क्या क्या करना चाहिए उसको लिस्ट कर देना चाहिए, ठीक है. 1 2 3 4 करके उसको लिस्ट करना चाहिए, हमें ये ट्रेनिंग प्रोग्राम में क्या क्या कवर करना है, राइट. नेक्स्ट हमारा है जॉब डिस्क्रिप्शन. दिस सिंपली रिकॉर्ड्स ईच एंड एवरी कंपोनेंट्स ऑफ द जॉब व्हिच एन इंडिविजुअली हैज टू परफॉर्म इन ए गिवन सेट ऑफ, राइट. इसमें हमें ये डिस्क्राइब करना है कि जैसे कि हम किसी को फॉर ए जॉब स्टेनोग्राफी या फिर प्राइवेट सेक्रेटरी, तो जॉब डिस्क्रिप्शन में इंक्लूड टेकिंग डिक्टेशन, टाइपिंग द मैटर, राइट. तो इसमें हमें उस जॉब का क्या क्या कंपोनेंट है उसको फुल्ली डिफाइन कर देना है, राइट. देन जॉब स्पेसिफिकेशंस ऑन द बेसिस ऑफ द जॉब डिस्क्रिप्शन, इसके हिसाब से जॉब स्पेसिफिकेशन डिसाइड किया जाता है. ए लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट्स इज प्रिपेयर्ड एंड इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, एज, वर्क एक्सपीरियंस, स्पेसिफिक नॉलेज, स्किल्स, एक्सपर्टाइज एंड टेम्परेचर, राइट. जैसे हमारा एक एग्जांपल है, besides the short hand and typing skill, the person needs to have a good knowledge of language for the stenography. Then next one is job evaluation. Job evaluation ये है that is treated an independent activity outside the job analysis, but the job analysis provides significant data information which is useful for job evaluation. जो job analysis है that will give the data for the job evaluation. जो हमने job दिए हैं देन उसको इवेलुएट कैसे करना है, राइट. देन इसका भी कुछ पार्ट्स है, दैट इज टास्क, जॉब, पोजीशन, रोल, वर्क. इम्पोर्टेंट नहीं है, प्रोसेस ऑफ जॉब एनालिसिस, यू कैन गो थ्रू दिस, राइट. देन जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए वो ये, दैट इज डाटा एनालिसिस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, right. After collection of data from different stakeholders through interviews, observations, questionnaires, method, it is discussed with the experts to clearly draw the job description and job specifications. The job description is presented in the following way, right. First हमें जॉब आइडेंटिफाई करना है, जॉब को आइडेंटिफाई करना है कि हमें जॉब क्या करना चाहिए. जॉब टाइटल रहना चाहिए, अल्टरनेटिव सजेस्टेड टाइटल, डिपार्टमेंट, प्लान, जॉब कोड. देन जॉब का समरी देना चाहिए, इट इज द डेफिनेशन ऑफ द जॉब, हम कौन सा काम करने के लिए जा रहे हैं उसको फुल्ली डिटेल्स, राइट. देन फर्दर एक्सप्लेनेशन ऑफ द जॉब टाइटल. देन उसके बाद जो हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज ड्यूटीज परफॉर्म्ड. ड्यूटीज इसमें क्या क्या, इसके अंदर क्या क्या ड्यूटीज कवर्ड होगा. देन सुपरविजन, गिवन एंड रिसिप्ट. देन रिलेशन टू द जॉब्स, दैट इज मैचिंग टूल्स, राइट. वर्किंग कंडीशंस इंक्लूडिंग फिजिकल एंड मेंटल, कौन से कंडीशन में काम करना पड़ेगा. देन जॉब स्पेसिफिकेशन. जॉब स्पेसिफिकेशन इट इंक्लूड्स एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, knowledge and skills, कौन से स्किल है, लेवल ऑफ नॉलेज, स्किल्स रिक्वायर्ड व्हिच कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड, पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, फिजिकल मेकअप, इंटरेस्ट एंड अदर रिक्वायरमेंट्स, राइट. इंटरेस्ट मतलब द पैशन एंड एरिया ऑफ इंटरेस्ट. सो ये वाला you can go through this just for once to get some ideas, right. So in the next one we are going to discuss the training and development, that is role and impact of training. So here and this is very important. We discuss establishing training development system as part of HRD. Why? It involves identification. Just go through this. This is very important, right. That is identification. Identification of training needs, designing of training, conducting of training, evaluating training, selection and development of trainers, right. तो इसमें जो हमारा रहता है पर्पस ऑफ ट्रेनिंग, जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, इसका पर्पस क्या होना चाहिए.
पर्पस ये है इम्प्रूव परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल ऑन हिज प्रेजेंट जॉब, जो उसका परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव करने के लिए हेल्प करेगा. हिज प्रिपरेशन फॉर एन आइडेंटिफाइड जॉब इज नॉट टू डिस्टेंट फ्यूचर, हिज जनरल ग्रोथ नॉट रिलेटेड टू एनी स्पेसिफिक जॉब्स. सो ये वाला है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. नॉर्मली क्या होता है ना हमें कि उससे हमारा जो न्यू टेक्निक्स रहता है या न्यू डेवलपमेंट विथ रेस्पेक्ट टू द मार्केट के हिसाब से हमें जो पर्सनल्स है उनको क्या क्या ट्रेनिंग देना पड़ता है उसको हम ट्रेनिंग के अंदर ही HRM डिपार्टमेंट उसको बताता है. इन बैंक्स ऑल्सो जब कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी आता है या कोई न्यू सर्कुलर्स आता है उसको जैसे हमारा मिडिल मैनेजमेंट फ्रंट मैनेजमेंट उनको ट्रेनिंग के थ्रू ही बताया जाता है, सो दैट दे विल गेट acquainted with all the developments in the bank or in any institutions regularly, right? Then the other things we can go through here also. This is important point. Training is a learning related to present job. Education is for learning to prepare the individual for a different identified job. Development is learning for growth. So this is theoretical things, not that much very important. There are some theories, that is behavioral theories, cognitive theories and organism, that is humanistic theories, mechanistic behavioralist theories. इसमें क्या करता है ना आपका जो लर्नर को passively in the process of learning, लर्नर को is passive, मतलब लर्नर is not directly connected but in the learning process learner is indirectly passively connected. cognitive theory क्या करता है इसमें आपका जो पर्सनल है उसको उसके ब्रेन के साथ कनेक्टेड किया है, ठीक है. और ह्यूमनिस्टिक बोलता है कि these theories told that learning occurs only when learners have the freedom to learn. Humanistic, they need to give them freedom, they need to be free to learn anything whatever they require, right? So ये वाला इम्पोर्टेंट नहीं है. नेक्स्ट हमारा है सिस्टमिक अप्रोच टू ट्रेनिंग, राइट? तो इसमें क्या क्या सिस्टम्स है. फर्स्ट हमारा सिस्टम है ट्रेनिंग नीड एनालिसिस, TNA, आइडेंटिफिकेशन ट्रेनिंग नीड्स, प्रिपरेशन ऑफ ए ट्रेनिंग प्लान. नेक्स्ट है कंडक्ट ऑफ ट्रेनिंग विच इंक्लूड्स डिजाइनिंग programs in terms of time, duration, target group, sequence, input and methodology, evaluation of training program and plan, selection of the and development of the trainer. So these are the steps, right? So first है हमारा है ट्रेनिंग नीड, TNA, identification of training needs through the training need analysis is the first step for successful implementation of any train. हमारा क्या ट्रेनिंग करना है चाहिए, क्या रिक्रूटमेंट है, उसको हिसाब से ही हम जो ट्रेनिंग प्रोग्राम उसको एनालाइज करें, राइट? देन हमारा नेक्स्ट स्टेप रहता है प्रिपरेशन ऑफ ट्रेनिंग प्लान, जिसमें कौन सा नंबर ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम टू बी कंडक्टेड, लेवल ऑफ एम्प्लॉइज, कौन से एम्प्लॉय को इसमें इंक्लूड करना चाहिए. जैसे बैंक में हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम कंटिन्यूसली होता रहता है डिफरेंट, जैसे बिजनेस असिस्टेंट, क्लर्क्स एंड ऑफिसर्स दोनों के लिए डिफरेंट. क्रेडिट में होता है, ऑपरेशन में होता है, क्या क्या करना चाहिए क्रेडिट में, मैक्सिमम टाइम्स क्या क्या कौन सा लोन क्या क्या चेंजेस हुआ है उसको रेगुलरली मैनेज किया जाता है, रेगुलरली ट्रेनिंग प्रोग्राम मैनेज किया जाता है, राइट? व्हाट विल बी द सब्जेक्ट एरियाज, क्या क्या सब कौन सा टॉपिक कवर करना चाहिए, व्हाट विल बी द प्लान फॉर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, क्या प्लान हमारा रहना चाहिए उसको भी डिस्कस किया जाता है. व्हाट अरेंजमेंट्स आर टू बी मेड अकोमोडेट समथिंग, राइट? सो नेक्स्ट वन है कंडक्ट ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम्स. ये जो हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टेप 1 स्टेप 2 तक कौन मैनेज करता है, किसी कॉर्पोरेट ऑफिस. एंड द थर्ड स्टेप जो नेक्स्ट स्टेप है कंडक्ट ऑफ, ये हमारा ट्रेनिंग सेंटर में मैनेज किया जाता है, राइट? सो हियर वी आर गिविंग द आइडियाज व्हेन द एक्चुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम इज हैपनिंग, दैट इज ट्रेनिंग सेंटर्स, कंडक्ट ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप. नेक्स्ट जो कंडक्शन हो जाता है उसके बाद हमारा क्या रहता है नेक्स्ट स्टेप इवैल्यूएशन ऑफ ट्रेनिंग. जो ट्रेनिंग खत्म हो गया उसके बाद ट्रेनिंग से क्या क्या लर्न किए, हाउ दे आर मेकिंग इट मोर इफेक्टिव इन देयर वर्क. सो दिस इज इवैल्यूएशन ऑफ ट्रेनिंग, वैलिडेशन एंड इवैल्यूएशंस, राइट? एक टाइप का हम बोल सकते हैं असेसमेंट होता है, राइट? देन फर्स्ट वन, इसमें जो इवैल्यूएशन प्रोसेस रहता है ये 4 स्टेप्स में है. तो फर्स्ट वन इज रिएक्शन लेवल, लर्नर लेवल, द बिहेवियर लेवल एंड द फंक्शनिंग लेवल. रिएक्शन लेवल में जब ट्रेनिंग होता है दैट टाइम कुछ डाउट्स रहता है ट्रेनर का, जो ट्रेनिंग पर्सनल है उनको कुछ डाउट रहता है. सो दिस इज द रिएक्शन ऑफ द ट्रेनर इज इमीडिएटली आफ्टर द ट्रेनिंग, राइट? नेक्स्ट हमारा जो है लर्निंग लेवल. इसमें क्या क्या जो लर्न के नॉलेज स्किल्स क्या क्या उनको मिला है ये लर्निंग लेवल में पता चल जाता है. बिहेवियर लेवल में
ट्रेनिंग अप्लाई द लर्निंग टू एक्चुअल सिचुएशन। जब एक्चुअल सिचुएशन आता है ट्रेनिंग के हिसाब से वो कैसे उसको अप्लाई करते हैं, ये बिहेवियर लेवल से पता चलता है। नेक्स्ट है फंक्शनिंग लेवल्स। फंक्शनिंग लेवल इज द चेंजेस इन बिहेवियर ऑन द जॉब इफेक्ट अफेक्टिंग द फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। हाउ जो उनका बिहेवियर में चेंज होगा, हाउ देयर बिहेवियर चेंज विल अफेक्ट द डेवलपमेंट और फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस, दैट गिव्स इन द फंक्शनिंग लेवल। गो टू दिस ऑल्सो सेम रिएक्शन, लर्निंग, बिहेवियर एंड द फाइनल रिजल्ट। देन हमारा जो नेक्स्ट आता है सिलेक्शन। सो दिस इज समथिंग लाइक सिलेक्शन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेनर। जो हमारा ट्रेनर होते हैं, जो ट्रेनिंग प्रोग्राम को कंडक्ट करते हैं, वो नॉर्मली HR स्पेशलाइज्ड पर्सन रहते हैं, those who are more specialized in that HR, right? So now they can give more. So ये जो selection and development of trainer रहता है, ये more important रहता है, या another important activity, but the aspect need to be consciously looked. Training has to be effective. So ये जो selection of trainers are very important. अगर आप ट्रेनिंग प्रोग्राम को more effective करना चाहते हैं, then you need to be more focused, right? So next final step है हमारा selection and development trainers. Then support systems of training development. इसमें हमारा रहता है HRIS, the Human Resource Information Systems, is another supportive systems for effective training. Since the data regarding on the experience, placement, skill acquired by the professionals, qualification, training method is stored here, the services are useful for the data for the training. A comprehensive updated HRS and the development efforts. इसमें सब डाटा स्टोर रहता है, that is Human Resource Information Systems, right? So these are the things you can go through this. So this is, you can just read for once all those things so that you can get to know what actually HRM is, right? So in the next video we are going to discuss the next topic, that is attitude development, and further we'll go. So for till that time, keep practicing and also follow this book for more reference, right? And also subscribe our channel for getting more updates. Thank you.